Hello my dear student, I will revise some question related with the error and significant figure as well as round off, because tomorrow your weekly exam is going to be held. So those students who have joined in our institute late, so all of them are clear and face exam and solve question easily, so that I will revise this error and significant figure round off in today on the focus of tomorrow exam. So tomorrow exam को देखी कि मु जेहेतु तुम error आउ significant figure round off रू question टा आउसी, तो से रीजन रो पाई मु question टा रिवाइज question related केदारा question टा मु रिवाइज कर दोच, जाद्वारा कि जेन जेन पिला ने लेट रे जॉइन करिछो से पिला ने भी एग्जाम जहाँ भी किसी गोटे इम्प्रूव करी दे पारिबो. So देखो error. So I can't say about the type of error because there is no more time in first for one class. So I only solve some question related with the error. So type of error you already studied that. One is systematic error, another is random error. So all of these are easily and you are already studied. So I can't say about this. I only say that mathematical value of the error. How can the mathematical questions are related with the error? So you know that what is error? What is error? Suppose this is your college, Pravati College, this is your college, and suppose this is your home. This is your home. And the distance between your college and your home is suppose 20 km. So this 20 km is call it true value. True value is 20 km. But if you want to know the exact value of distance, how far distance is your Pragati College to home, then you measure, and suppose the measure value is, if you measure by the help of tape or any meter tape, then the measure value is comes 20.5 km. Or suppose your measure value is comes 9.5 km. But you know that the true value that the distance between your college to home is 20 km. But when you measure, then your distance from college to home is 19.5 km. That means you say that some error occurs in your measurement, because true value is 20 meter from your college to home. But when you measure, then your measure value is 19.5 km between your college and home. So what is your error? You usually say that error is 0.5, because in your true value the measure value is difference by only 0.5. So how can you see? The mathematical value of error is equal to true value minus measure value. True value minus measure value. That means true value is your 20 km, and when you measure, then your measure value is 9.5 km. So देखो तुम मन रखी जेकोसी मेजरमेंट करुच बोले से केबे भी समान नहीं हुए, ट्रू वैल्यू से किसी ना किसी गोटे डिफरेंस बाहर. तो डिस्टेंस तुम कॉलेज रू होम जाए 20 km अच्छे, कि तुम मेजर कल 19.5 है. तो ट्रू वैल्यू केते तुम ट्रू वैल्यू केते डिफरेंस आसल तुम मेजर करबा द्वारा 0.5. so that 0.5 how can you obtain? You when subtract true value to measure value. So error is equal to true value minus measure value. So in this case error is 0.5. Then how can we represent the value of physical quantity in terms of error with errors? That means in this case we study length or distance. So you know that true value is 20, but in this case error is 0.5. So
सो क्लियरली बुझल जे तुम जेकोसी डिस्टेंस को मेजर करब तो फर्स्ट ट्रू वैल्यू रखब आ एरर जेते अच्छे प्लस माइनस 5 लेब प्लस माइनस के लिखल एरर में भी 0.5 अधिका भी पारे एरर कम भी पारे तार माने एरर कमी गला 19.5 हला तार माने जदी एरर 20.5 भी थांता सॉरी इन हमर मेजर वैल्यू जदी 19.5 जाती जदी तमे कॉलेज रु होम जाय मेजर कलो देखलो जे हमर 20.5 हला so true value to measure value to minus column so in this case your answer is minus 0.5 so error may be positive negative so error केते बेले प्लस ही परबा केते बेले माइनस ही परबा तो एरर सब प्लस माइनस 5 करबो सो जे कोनोसी वैल्यू रिप्रेजेंट करबो के हिसाब रे जे कोनोसी वैल्यू रिप्रेजेंट करबो सपोज द ट्रू वैल्यू इज a and plus minus error is delta a because error is represented by delta मन रखिथिबो एरर का सिंबल होचे डेल्टा इन दिस केस एरर इन लेंथ डेल्टा l is equal to minus 0.5 ठीक আছে तो एबे देखमा आमे मुखल सिंपल एग्जांपल देखो बुझो छै r1 is equal to suppose 300 plus minus 4 and r2 is equal to suppose 400 plus minus 3 this is ohm and you want to find out the equivalent resistance in series connection and in your question there is a clue that equivalent resistance is R1 plus R2 so when this two value is added that the equivalent resistance in series connection is equal to R1 plus R2 in this case R1 is 300 plus minus 4 plus R2 is 400 plus minus 3 so true value मन रखिथिबो गोटे फिजिकल क्वांटिटी रो जो वैल्यूटा रिप्रेजेंट होची ट्रू वैल्यू सब बेले आगे रहबा विथ एरर दैट मींस एरर मे बी 304 हबो सॉरी मेजर वैल्यू तमर मे बी 304 हबा अदरवाइज मेजर वैल्यू मे बी 296 हबा सेति पई एरर 4 हैला बिकॉज़ ट्रू वैल्यू 300 टू एरर 4 बारुची मींस मेजर वैल्यू 296 थिबो अदरवाइज मेजर वैल्यू 304 तामने एरर का प्लस माइनस 4 है बिकॉज़ ट्रू वैल्यू तमर जेते मेजर वैल्यू रहउची तो तुम सिंपली मन रखिथिबो जे कोनोसी फिजिकल क्वांटिटी का हम एरर सहित रिप्रेजेंट करिबा मींस ट्रू वैल्यू सहित प्लस माइनस एरर लेखबो सो देखो so in this case net resistance is equal to true value in this case true value is 300 in this case true value is 400 so true value is 700 plus minus error in this case error is 4 in this case error is 3 so plus minus 7 so net resistance with true value with error is 700 plus minus 7 so you must be remember that in case of addition or in case of subtraction error is always added error cannot be subtracted suppose I give an example for subtraction suppose your initial temperature is 5 degrees Celsius plus minus 2 5 plus minus 2 degrees Celsius and your final temperature is 10 plus minus 3 degree Celsius. So find your change in temperature. Change in temperature. Change in temperature. So how can you get change in temperature? The final temperature minus initial temperature. So final temperature will be plus minus 3 minus initial temperature is T1 is 5 plus minus 2. So in this case true value are always जेहेतु इ दुईटा वैल्यू सबट्रैक्ट हिचे तो ट्रू वैल्यू भी सबट्रैक्ट हेबो सो फाइनल टेम्परेचर और ट्रू वैल्यू 10 और इनिशियल टेम्परेचर और ट्रू वैल्यू 5 ट्रू वैल्यू आगे रहबा मन रखिथिबो so 10 minus 5 is 5 plus minus in this case as these two values are subtract so error should be subtract but not actually happen error is always added तमे जदी भूल करूथिबो बोले भूल बढ़ी जाउथिबा जेतेटा भूल हेबो
किंतु भूलटा केबे भी ऐड ही नहीं पारे, सॉरी भूलटा केबे सबट्रैक्ट ही नहीं पारे। सो इन एरर अच्छे 3, इन एरर अच्छे 2, 5 plus minus 5 80 Celsius, this is change in temperature। so clearly मतलब subtraction हेले भी एरर टा ऐड हो। then यदि multiplication हेले काना हो देखो, multiplication the multiplication है suppose that b is equal to I, suppose b is equal to IR। so जो तुम v is equal to IR देथिबा मतलब multiplication केस देथिबा, देखो multiplication और division केस रो काजे फार्मूला समान, multiplication और division केस रो काजे फार्मूला का समान है भाई रो। तो v is equal to IR देथिबा, suppose that I देथिबा तम 10 plus minus 2 एम्पियर और R देथिबा तम 20 plus minus 4 ओ और तुमके पचरे थिबा v error, delta v means error of potential voltage v, और only v पचरे थिबा, v means only true value। so how can you get true value? Is easily get, because in this case true value I is 10 and true value R is 20, so this is your clue। so v is equal to I into R, so v is equal to true value is in this case 10 and instead of R true value is 20, so v is equal to 200। so true value you easily get, true value is easily get, but how can you obtain error? As in product and as in addition and subtraction you add the error, but in case of multiplication division you add the error किंतु relative error ही add हवा, but you add relative error in case of multiplication and division। that means in this case you want to find the v, delta v, so first you get put formula, then in this case this is product, so we take the relative error, v is delta v by v, I रो relative error होगा delta I by I, और r रो relative error होगा delta r by r। clearly बुझलो, so we easily get delta v, but मन रखिथिबो multiplication case रे सब बेले हमर relative error माने ऐड हेबे, I रो relative error delta I by I, r रो relative error delta r by, किंतु relative error ऐड हो मन रखिथिबो। so in this case delta v true value is 200, easily we get, because I ro true value 10, r ro true value 10, 200, so you get easily v is equal to I r, true value is v 200 delta I, in this case I ro error আছে 2 upon true value error कितना আছে 10 plus in this case r ro true value আছে 20, error कितना আছে 4। क्लियरली बुझलो, एवं हमके डेल्टा v रो एरर दरकार, सो डेल्टा v दरकार, सो डेल्टा v is equal to in this case v is division, here यानी multiplication of v and v जगह पे कितना लगेगा 200, so डेल्टा v is equal to 24 plus 1, 5 upon 20, 200। 10 into 5, so delta v is 10 into 5, so delta v is in this case delta v is 50, so lastly we get final answer delta v is 50, but you know that the value is represented with true value and error, so v is represented with, suppose v dash is represented with true value plus minus error, so v dash is equal to true value is dash, true value is 200, because this true value I is 10, r is 22 value, so v is true value 200 plus minus error is 50, delta v is 50,
But how can you obtain? In case of multiplication, you always add relative error. And in this case, if the question arises percentage error in potential, suppose the question is percentage error of V, then how can you obtain? मन रखिथिबा जो रिलेटिव एरर टा बाहरिबा से रिलेटिव एरर तुम 100 मल्टीप्लिकेशन करबो मींस सेटा इज परसेंटेज एरर. सो इन दिस केस दिस इज परसेंटेज एरर. सो डेल्टा I upon I plus delta R upon R, this is relative error. In this case you multiply 100, so in this case also you multiply 100. So this is the percentage error. So अब just तुम्हें देखिए delta I2 upon 10 plus delta R 4 upon 20, because error is 4, true value is 20 into 100. So 100 का multiply करोगे, that is considered as percentage error. So this is percentage. This error for V, and if you multiply 100, so this is percentage error in V. So this is percentage error in V. Instead of this, we can use percentage error in V. So percentage error in V कितना हुआ? 20. This is 5 into 100. Clearly बुझला? The mean percentage error in V is equal to, this is 20 by 5 into 100. Percentage error is 25. So if we express the true value or measurement value, physical quantity with a percentage error, then how can we express that? Voltage is equal to true value is less. True value is 200 plus minus percentage error is 25%. Next, এই টাইপের তোমার কোশ্চেন মানে দেখব এরর রিলেটেড কোশ্চেন. Suppose we will get Z is equal to A square B by C square. In this case, A is equal to 10 plus minus 2, B is equal to 20 plus minus 6, C is equal to 15 plus minus 4. तो मन रखिथिबो जे सब बेले एटा होचे ट्रू वैल्यू और प्लस माइनस जहा होचे सेटा तमा एरर मन रखिथिबो जेना कि तमा ट्रू वैल्यू रु टिके डिफरेंस होछि. सो बाहर करो. सो तमे बाहर करबो Z is equal to A square B C square. ई कनेक्शन रो तमा एरर बाहर करबो. सपोज अगर क्वेश्चन दे दिबा परसेंटेज एरर बाहर करबो. परसेंटेज एरर इन Z. सपोज अगर हम क्वेश्चन रो कहिबा परसेंटेज एरर इन Z पचरे दिबा के हिसाब से बाहर करबो. you know that this value are multiplication and division, and in case of multiplication of division we know that the relative error are always added. So in this case Z relative error delta Z upon Z. A square relative error delta A upon A, but this is square, this is forward, this exponent, this power is x as exponent or coefficient, sorry, this power is x as coefficient. आपको पड़ेगा एरर केस में तुम जानिछो एरर लाला पर पावर आके पड़ेसी प्लस b रो डेल्टा b upon b प्लस c रो एरर डेल्टा c upon c, and this power 2 आके पड़ेगा. सो देखो हम आराम से बाहर करना delta J upon Z is equal to 2 into delta A. Error कितना होचे? error 10, sorry, error A होचे 2 upon true value होचे 10 plus B error कितना होचे 6, true value होचे 20 because error upon 2 value,
In this case C रो true value আছে 15 और error আছে 4, तो 4 upon 15. But in this case C is square थिला, तो square लगे. So जहाँ भी तुम आंसर बाहरिबा, आंसर बाहरला परे तुम इन एरर बाहर करवा আছে, परसेंटेज एरर पाइबा আছে, so delta z upon z into 100. So this is percentage error in z. जेहेतु तुम इटा मल्टीप्लाई करो, so ई टर्म्स की कहबा percentage error in z. So जदि ई आर तुम percentage error मल्टीप्लाई करबो बोले ई टर्म्स रे भी तुम का करबो, percentage error मल्टीप्लाई करबो 5 2 upon 5 6 upon 20 plus 8 upon 15 जहाँ भी बाहर होगा into 7. because इस साइड में तुम 100 मल्टीप्लाई करो, इस साइड में तुम 100 मल्टीप्लाई करो, और इस साइड 100 मल्टीप्लाई कला पर दिस इज परसेंटेज एरर. और रिलेटिव एरर ऑलरेडी तुम पढ़ी छ. रिलेटिव एरर मींस का ट्रू वैल्यू रो केते एरर बाहर छ, दैट इज रिलेटिव एरर. दैट मींस डेल्टा z upon z. रिलेटिव एरर फार्मूला मन रखिथिबो जे तीन एरर रिलेटिव एरर तुम के हिसाब पाइबो. एरर ट्रू वैल्यू के 2 सॉरी एरर ट्रू वैल्यू के 10, एरर की 2, तो ट्रू वैल्यू केते एरर बाहर छ, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एरर. सपोज small a is the true value and delta a is the error. So this is relative error of a, because error relative error, true error true value error के divide करो. In this case z रो true value delta z के divide करो, that is relative error, and if that relative error expresses in percent, then that is called as percentage error. ठीक আছে. एबे हम पढ़मा significant figure. देखो इन हम डेल्टा z बाहर ट्रू वैल्यू ऑफ z आराम से बाहर जाई था, बिकॉज़ a स्क्वायर b पाई c स्क्वायर अछि, तो डायरेक्ट a स्क्वायर b और c स्क्वायर और ट्रू वैल्यू पुट करथिले z रो ट्रू वैल्यू बाहर जाई था आराम से. ओ छाड़ो, तो बहुत सहज तुम ये पढ़ी छ जानबो. एबे देखो हम सिग्निफिकेंट फिगर मन रखिथिबो. सिग्निफिकेंट फिगर मींस किछि नै, खाली से गुडे नंबर रे केतेटा डिजिट रही पारबा, दैट इज रिप्रेजेंट बाय द सिग्निफिकेंट फिगर. अब केतेटा रूल अछि, मो रूल हिसाब रे ही पढे भी डायरेक्ट पढो छ, तुम निजे बुझो. फर्स्ट रूल सपोज धरो मो केतेटा संख्या नेबी, फर्स्ट रूल लगा दिए. सपोज धरो मो संख्या नेली 2.23.6 आई डबल ए लगा तुम 2 3.2346 2 3 4 2.346, then finally 0.2346. So in this case the significant digit or significant error is this. The significant figure is this. Sorry, तो significant figure means गोटे नंबर रे केतेटा डिजिट अछि सेटा ही रिप्रेजेंट करबो, किंतु तार पाई किछटा रूल अछि. देखो इने डिजिट केतेटा अछि 4 टा, इने 4 डिजिट अछि, इने 4 डिजिट अछि, किंतु इने 5 डिजिट अछि. तो सिग्निफिकेंट फिगर केते हेबा, सबको खाली सिग्निफिकेंट फिगर हेबा 4. मन रखबो डेसिमल पूर्वरु जदि तमर 0 टा रहबा, दैट इज नॉट कंसीडर एज सिग्निफिकेंट फिगर. किंतु डेसिमल परे रही पारबा बेला हमें ताके केते बेले सिग्निफिकेंट कर्मा हमें कहि पारमा, किंतु डेसिमल पूर्वरु रहले ताको हमें सिग्निफिकेंट फिगर केते बेले भी नै. सो मन रखिबो जे before decimal, if 0 is present, then it is not considered as significant digit.
तो नेक्स्ट देखो आउ केतरा एग्जांपल देमा जदी हम 0 आके रखले काना होबा देखो सेकंड केस ना सपोज धरो इन हम 0 आके रख देमा 2 3 0 5 सपोज इधर 0 आके रख देला डिवाइड बाय 2 3 0.5 0.05 09 धरो तीनटा धरो किसी असुविधा तीनटा को देखो तीनटा देखो सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से बाहर कर तो देखो 0 पूर्व जदि डेसिमल पूर्व सॉरी डेसिमल बहुत इंपोर्टेंट डेसिमल को देखो डेसिमल पूर्व जदि 0 अच्छे दैट इज नॉट कंसीडर्ड ए सिग्निफिकेंट फिगर सिग्निफिकेंट डिजिट तो देखो इने सिग्निफिकेंट डिजिट केतेटा আছে তুমি নিজে দেখো इने सिग्निफिकेंट डिजिट केते আছে डेसिमल পরে তোমার 0 আছে तो इट इज कंसीडर्ड ए सिग्निफिकेंट डिजिट किंतु डेसिमल পরে भी 0 थिले सिग्निफिकेंट डिजिट कंसीडर करा नहीं जाए मन रखिथबो केते बेले 0 के सिग्निफिकेंट डिजिट कंसीडर करा जिबा व्हेन द 0 बी इज प्लेस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट मींस संख्या 5 9 ई टाइप रो जदी संख्या भितरे 0 थिबा प्ले सेते बेले ही ताके हम सिग्निफिकेंट डिजिट से कैलकुलेट करम सो इन दिस केस सिग्निफिकेंट डिजिट इज केते 509 मींस तीनटा सिग्निफिकेंट डिजिट আছে इने केतेटा सिग्निफिकेंट डिजिट আছে इने तो सिग्निफिकेंट डिजिट केतेटा আছে केतेटा আছে सिग्निफिकेंट डिजिट इने तो चारटा सिग्निफिकेंट डिजिट আছে बिकॉज तमर नंबर दुटा नंबर ভিতরে तमर जीरोटा রয়েছে तो মনে রাখো যে ইন সিঙ্গেল খালি জিরো থিবা বিফোর डेसिमल ओनली 0 थिबा बोले ही दैट इज नॉट कंसीडर्ड सिग्निफिकेंट डिजिट बिफोर डेसिमल ओनली 0 थिबा ओनली 0 इज प्रेजेंट खाली 0 थिबा तो दैट इज नॉट कंसीडर्ड सिग्निफिकेंट डिजिट किने बिफोर डेसिमल भितरे भी बिफोर डेसिमल परे भी तम दुटा संख्या भितरे तम डिजिट अछि 0 टा अछि इने भी 0 टा दुटा संख्या भितरे अछि सो मन रखिबो बिटवीन नॉन डिजिट नंबर if 0 is present then it is considered as significant digit so suppose it is 1 then I write that all of these numbers having same significant digit in this case the significant digit is 1 2 3 4 in this case significant digit is 1 2 3 4 in this case this is not significant digit because before decimal only 0 is left so it is not considered as significant digit. So in this case also after decimal there is no number within that the 0 is present so it is not considered as significant digit. So this 0 is considered as significant digit because this 0 is placed between non-digit number. So 1 2 3 4 in this case also 1 2 3 4 in this case 1 2 3 4 so all of the numbers having same significant digit. So इन रूल पाइलो तमे जे जदी तमर 0 टा दुटा नॉन डिजिट भितरे रहबा बोले दैट इज कंसीडर्ड ए सिग्निफिकेंट डिजिट देखो ए 0 के हमें सिग्निफिकेंट डिजिट कंसीडर करू 2 तापर 9 3 1 4 सो सिग्निफिकेंट डिजिट केते है चेकटा हला in this case also we consider 0 as a significant digit then 1 2 3 4 so when 0 is considered as significant digit whenever the 0 is placed between two non-digital number or digit so in the formula hala je if 0 is placed or present between two non-digital non-zero digit means जा वैल्यू टा 0 ऐसे सेम अंक तो दुईटा नॉन डिजिट भितरे तुम 0 अच्छे so 0 is considered as significant digit so if 0 is present between two non-zero digits then it is
considered as significant digits. So clearly बुझलो इन जीरो के हमें significant digits क्या जने कोई ना से डेसिमल करे अछि का जने कोई बिकॉज़ दुईटा नॉन डिजिट्स भितरे जीरोटा प्रेजेंस ही नहीं ना सेति भाई जीरो को हम significant digits नहीं को जीरो के को जो जीरोटा दुईटा नॉन डिजिट्स संख्या भितरे तमर प्रेजेंस रहबा दैट जीरो इज कंसीडर्ड एज significant digits. So in this case the value टा दीचे डिजिट केते अछि 1 2 3 4 5 6 6टा अछि किंतु significant digits केते हैला 4 because these two zero are not considered as significant digits. For this zero considered as significant digits because the zero is present within the two non-digital digits. Clearly बुझिथिबो. Next हमें आउ देखमा जदि आ गोटे रूल देखो आ गोटे रूल सपोज इन दिस केस 2300 5300 2400 6700 in this case number of significant digits is x देखो मुझे जंटस आगे लिखुचे that is number of significant digits मन रखिथिबो that is number of significant digits आगे जंटा होचे. So in this case significant digits is only 2. So significant digits is 2. So जदि तमर जीरोटा तमर लास्ट रे रोचे so that is not considered as significant digits. हां जीरोटा जदि भितरे रहि थांता देखो भितरे अछि so zero is considered as significant digit. In this case zero माने सब बाहर रहउछ so zero माने जेतु बाहर रहउछ so it is not considered as significant digits. Clearly बुझलो so it is this type of number where zero are presence the zero on which side होता right side then they not considered as they not considered as significant digits. किंतु गुटे केस रे तमर इमाने कंसीडर करबे सिग्निफिकेंट डिजिट्स केते बेले if this value represent the measurement of any given physical quantity जे कोनो से physical quantity रो measurement जदि value टा represent करबा then in this case we consider the zero or non digit significant digits. That means so clearly बुझलो जे इन देखो तमर जीरो टा डेसिमल पूर्व रहले ताको हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स कंसीडर नहीं करू दैट इज फर्स्ट प्रूफ. देन जीरो टा जदी दुईटा नंबर भितरे जदी रहबा बोले ही ताके हमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कंसीडर करमा कैलकुलेशन करमा 1 2 3 4 तापर जीरो जदी बाहर रहबा बोले भी ताको हमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स हिसाब से कंसीडर नहीं करू. किंतु if this value represent the measurement of any given physical quantity then in this case the zero are considered as significant digits. Suppose length is 2300 meter. Time is 5300 second. So in this case these values are not represent any given physical quantity. So in this case the zero are not considered as significant digits. But if the value represent any measurement of a given physical quantity then in this case zero are considered as significant digits. In this case digits is 1 2 3 4 digits. In this case also जदि मैं आगे सुन पके बाले ए 1 2 3 4 5 digits. तो किंतु केते बेले तम से जीरो मान को हमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स रे कंसीडर करम जते बेले से माने गुड फिजिकल क्वांटिटी रो मेजरमेंट के रिप्रेजेंट करबे नहले से माने जदि इंडिविजुअली रहबे बोले ताको हम ता जीरो मान को हमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स रे कंसीडर ही नहीं करू. किंतु से जदि फिजिकल क्वांटिटी के रिप्रेजेंट करबे
से बेले से जीरो मान के हमें सिग्निफिकेंट डिजिट रे कैलकुलेट करि परबा। नेक्स्ट हम देखो जहाँ जहाँ कहूचे भल कर देखो काली एग्जाम रो काजे बहुत इंपोर्टेंट। एबा असला तुम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। सो देखो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंट करबा जे मन रखिबो सपोज करो मु लिखबी a * 10 टू द पावर b देन दिस पावर रिप्रेजेंट्स ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। दैट इज 10 ऊपर जो भी पावर रहबा से पावर के हमें कंसीडर करमा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। सो b इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। सपोज आई राइट ए length of a physical quantity, length of a physical quantity, that length only गुटे length क्या हमें बहुत बड़ा यूनिट रे मेजर करना केते मीटर रे केते सेंटीमीटर। तो सपोज फर्स्ट हमें मीटर में कंसीडर करना सो 4.70700 मीटर होबो। सेकंड कंसीडर करना 4.700 meter, then sorry 4.700 into our meter के सेंटीमीटर को लेके क्या होगा 10 to the power minus 2 सेंटीमीटर। Sorry 1 meter is equal to 6 centimeter. That means only 10 square centimeter. Then kilometer करना kilometer that means 1 meter is equal to 1000. Sorry, 1 kilometer is equal to 1000 meter. That means 1 meter is equal to 1 by 1000 kilometer. 1 by 1000 kilometer means 1 by 1000 can be written as 1 by 10 cube can be written as 10 minus 3 kilometer. So 4.700 meter. तो जब हम किलोमीटर को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 10 to the minus 3 kilometer. So in this case order of magnitude is 0. In this case order of magnitude is 0. This order of magnitude in this case is 0. But in this case order of magnitude is 2. इधर heading डालो order of magnitude इन्हें 0 है इन्हें 2 है. In this case order of magnitude is 3. So मान लो कि वो 10 रो power जिते रहबा that is called as order of magnitude. So ने 10 रो power ही नहीं ना 0 order of magnitude. In a 10 to the power 2 order of magnitude 2 in a 10 ऊपर power minus 3 होचे तो order of magnitude minus 3. So clearly बुझला तो मन रखिथिबो order of magnitude टा significant figure ऊपर डिपेंड कला कि नहीं कर। So unit तमे में भी चेंज करो unit देखो मीटर अछि सेंटीमीटर अछि किलोमीटर अछि किंतु से गिवन फिजिकल क्वांटिटी रो यूनिट के तमे चेंज करो यूनिट के चेंज करो किंतु यूनिट चेंज करबा द्वारा भी तारो सिग्निफिकेंट डिजिट का समान रहला। सो यूनिट चेंज करबा द्वारा भी सिग्निफिकेंट डिजिट समान रहउची। सो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सिग्निफिकेंट डिजिट ऊपर डिपेंड ही नहीं करे से सिग्निफिकेंट डिजिट समान रहबा किंतु ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में भी चेंज रहबा। देखो ये सिग्निफिकेंट डिजिट केते होबा 1 2 हेबा फिर जे दुटा जीरो के हम सिग्निफिकेंट डिजिट कंसीडर करबा बिकॉज़ इन यूनिट अछि मीटर। सो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 तो चारटा सिग्निफिकेंट डिजिट होते तो सिग्निफिकेंट डिजिट देखो गोटे फिजिकल क्वांटिटी रो सिग्निफिकेंट डिजिट समान रहउची किंतु ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड केतेबेले 0 केतेबेले 2 केतेबेले मीटर केतेबेले माइनस 3 विथ रिस्पेक्ट टू यूनिट। सो इने तो मन रखिथिबो जे सिग्निफिकेंट डिजिट cannot change with respect to change in order and unit of a given physical quantity. तार माने जे सिग्निफिकेंट डिजिट का तुम ऑर्डर चेंज हो कि यूनिट चेंज हो सिग्निफिकेंट डिजिट गोटे फिजिकल क्वांटिटी का समान ही रहला।
मन रखिथिबो जेन स्टार मारी को लगुचे सेटा होचे मेन पॉइंट एमे देखो हमें पढ़मा राउंड ऑफ हां आउले देखो तमे के हिसाब से तमे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करो सिग्निफिकेंट नंबर के देखो बहुत टाइम ही गला कि स्पीडली कोइ होचे टाइम बहुत ही गला सो फर्स्ट हमें देखमा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हमें गोटे सिग्निफिकेंट वैल्यू फिजिकल क्वांटिटी के हमें को हिसाब रे मल्टीप्लाई डिवीजन सब्ट्रैक्शन और एडिशन करमा विथ रेस्पेक्ट टू सिग्निफिकेंट वैल्यू तो सपोज मास दीचे तमर 4.27237 ग्राम धरो केजी धरो और वॉल्यूम दीचे तमर 2.51 मीटर क्यूब और तुमके पचरिछे डेंसिटी व्हाट इज डेंसिटी so you know that density is equal to mass by volume density is equal to mass by volume so mass केते दीचे 4.237 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम केते दीचे 2.5 so डिवाइड कला पर डेंसिटी हे जीवा तमर डेंसिटी हे जीवा 1.8804 यूनिट का लेवा केजी पर मीटर क्यूब केजी पर मीटर क्यूब सो देखो एबे हमें डेंसिटी रो वैल्यू जो पाइलो डेंसिटी रो सिंबल होचे रो तार वैल्यू पाइलो 1.68804 बहुत लंबा वैल्यू पाइलो सो ए जे लंबा वैल्यू पाइलो ताको हमें केन हिसाब रे शॉर्ट रे लिखि पारमा सो शॉर्टकट रे लिखबा का जे हमें का हेल्प करमा सिग्निफिकेंट फिगर रो हेल्प नामा सो ने फार्मूला माने रखिथिबो जे प्रोडक्ट आ डिवीजन तार माने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन केस रे आंसर बाहरला परे जेन मान के तुम मल्टीप्लाई करिचो तांकर सिग्निफिकेंट फिगर के देखबो और जो जा सिग्निफिकेंट फिगर ता कम रहबा आंसर ता तार रेस्पेक्ट रे ही लिखा जीवो सो देखो तुम मास और वॉल्यूम के मल्टीप्लाई करिचो सो दुई लोकर भीतर सिग्निफिकेंट फिगर काटा कम 2.51 होते हां काटा कम obviously वॉल्यूम रो आकार कम सो वॉल्यूम रो सिग्निफिकेंट फिगर कम अछि जणा पडुछि मास और वॉल्यूम रो सिग्निफिकेंट फिगर कम रहउछि सो एबे देखो जे जेहेतु वॉल्यूम रो सिग्निफिकेंट फिगर कम तो आंसर जोटा बाहरिला सेटा तमर ई सिग्निफिकेंट फिगर हिसाब रे बाहरिबा सो इने दशमिक डेसिमल पर केतेटा डिजिट्स अछि टूटा डिजिट्स अछि तो in this case also we can be use the answer after decimal we use 2 digits that means only 6 so why we use after decimal only 2 digits because when we multiply mass and volume we obtain density so between as compared to mass and volume the volume have low significant figure so answer is obtained with respect to the lower significant figure so mass और volume बितु जे तो volume रो significant figure कम अछि तो तार रेस्पेक्ट रे ही हमें आंसर को लिखमा तो तार रेस्पेक्ट रे देखो दशमिक पर डेसिमल पर दुईटा डिजिट अछि त हम डेसिमल पर दुईटा डिजिट लिखमा किंतु इस डिजिट जोटा लिखिछु ता पाखरे देखो जो डिजिट ता अछि तो 5 रु अधिका अछि तो 5 रु अधिका थिले राउंड ऑफ फार्मूला रे पड़बो जे 5 रु अधिका थिले त पाखरे जो संख्या रहबा से आंसर तबले से पॉजिटिव +1 हे जीवो सो 6.68 जाके हम 6.9 ला किंतु जे जदी 5 रु कम थिता जो संख्या ता तुम लगबा के जोचा तार पूर्व रु जदी तार परे जदी 5 रु कम थांता से संख्या जेते के से लिखि किंतु ई रे जो संख्या लगबा के चाउछ तार परे 5 रु अधिका अछि 5 रु अधिका अछि सेठी जन का जे पाखर संख्या जोटा लगबा के चाउछ तार के एक अधिक पहिले लिखलो मन रखिबो सेटा राउंड ऑफ रो फार्मूला सो तुम इने मन रखिथिबो जे तुम डिवीजन को बुझे देली किंतु प्रोडक्ट क्षेत्र रे भी प्रोडक्ट क्षेत्र रे जे तुम रिवर्स करबी वाइस वर्सा करबी बोले तुम जदी तुम मास बाहर करबो तो मास इज इक्वल टू केते हबा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम तो जहां भी आंसर बाजबा सेटा भी तुम बहुत बड़ आंसर रे बाहरिबा ताको मु स्मॉल करी कर केन हिसाब से लिखबी जे तो डेंसिटी और वॉल्यूम के निकोई मास आउसी डेंसिटी और वॉल्यूम के तुम देखबो जा सिग्निफिकेंट फिगर ता कम रहबा तार हिसाब से आंसर बाहरिबा और डेंसिटी रो 1.6 दोचे वॉल्यूम रो 0.51
तो इटार भी तीन इटार भी तीन तो सिग्निफिकेंट फिगर रे तोर पॉइंट पर दुईटा संख्या ही देखा जीव तो मन रखिथिबो जे प्रोडक्ट और डिवीजन केस रे तमर जो आंसर ता बाहरीबा से आंसर को हमें शॉर्ट करबा আছে बोले हम का को देखमा जे माने मल्टीप्लिकेशन ताकर भीतर जे जा सिग्निफिकेंट नंबर कम अछि तार रेस्पेक्ट रे आंसर लिखा जीवा और ये वॉल्यूम कम अछि तो वॉल्यूम रो रेस्पेक्ट रे लिखला तो वॉल्यूम रो रेस्पेक्ट रे 10 डेसिमल पर दुईटा संख्या अछि तो ये आंसर का डेसिमल पर दुईटा संख्या ही लिखा गला देखो बहुत जिनिस अच्छे पढ़े तो नहीं हुए लिस्ट काउंट ये देखी दियो ना राउंड ऑफ थाउ टाइम ही नहीं सो लिस्ट काउंट रो देखो डायरेक्ट कोई एग्जांपल दउ छै सब तरह स्केल सेंटीमीटर स्केल हो तो देखो सब तो जानि छ स्केल रो एटा एगो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ई टाइप रो होगा सो लिस्ट काउंट मींस जे आमे जते बेले प्रैक्टिकली सॉल्व करमा ले गुटे पॉइंट रे गुटे पॉइंट तमे गुटे डिवीजन रे केते ता मेजरमेंट ता केते हेबा दैट इज लिस्ट काउंट सो इन दिस केस गुटे डिवीजन रे मेजरमेंट केते हेबा हम के हिसाब रे जानबा लिस्ट काउंट ऑफ के हिसाब रे जानबा हमें फास्ट देखमा द मेन रीडिंग हो 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर रो तुम डिवीजन केते का 10 डिवीजन अछि सो तमे लगबा स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑफ स्केल स्केल रो स्मॉलेस्ट रीडिंग के 1 सेंटीमीटर और से 1 सेंटीमीटर भीतर डिवीजन केते अछि 10 डिवीजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन बहुत सहज लिस्ट काउंट मींस गुटे डिवीजन में आंसर केते बा बिकॉज़ हम जानि तो 10 डिवीजन 10 ता डिवीजन ले लेंथ केते होचे 1 सेंटीमीटर से गुटे डिवीजन रे वैल्यू केते हो लेंथ रो सेटा ही लिस्ट काउंट अब के हिसाब रे पाएबो जे 10 टा डिवीजन में जदी 1 सेंटीमीटर होची ले गुटे डिवीजन रे केते हो के हिसाब रे पाएबो 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय जे तो 10 डिवीजन में हम बाहर करछु divided by 10 division then this count is 1 centimeter divided by 10 division 10 division loli bujhlo 1 by 10 centimeter 1 by 10 centimeter means 10 to the power minus 1 10 to the power minus 1 centimeter godo division la tamo rahaba so least count of scale is 10 to the power minus 1 centimeter loli bujhlo तापर देखो इटा होचे लिस्ट काउंट केतेटा एग्जांपल देखो लिस्ट काउंट रो आ देखो राउंड ऑफ रो भी बते दामा टाइम ले हो अच्छा दो जाबे लिस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल लिस्ट काउंट ऑफ स्केल वाला 0.1 सेंटीमीटर दैट मींस हम लिस्ट काउंट ऑफ स्केल पर 1 मिलीमीटर मन रखिबो तापर देखो लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैपिलर लिस्ट तो लिस्ट काउंट वाले पूछो तो जे टोटल स्मॉलेस्ट देखो स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑफ स्केल के 1 सेंटीमीटर और स्मॉलेस्ट रीडिंग अछि तो से स्मॉलेस्ट रीडिंग केटा डिवीजन के आइस करे 10 डिवीजन के निकल सो गोटे डिवीजन रे जते वैल्यू टा आसबा दैट इज लिस्ट काउंट सो इन दिस केस लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैपिलरी देखो लिस्ट काउंट ऑफ देखो इटा माने ही परीक्षा में पकड़ा जाई छै तो भल कर पड़िथबो वर्नियर कैलिपर तो देखो এটা তোমার প্র্যাকটিক্যালি দেখাবা কথা আছে তো লিস্ট কাউন্ট অফ ভার্নিয়ার ক্যালিপার এটা একটা টাইপ অফ স্কেল তো এই স্কেলটা তা যেটা এটা তোমার 1 সেন্টিমিটার 2 সেন্টিমিটার 3 সেন্টিমিটার এই টাইপের রয়েছে তো এটা কেতেটা ডিভিশন রয়েছে দেখো গোটে দেখো ভার্নিয়ার ক্যালিপার নে যে ইনে যে 1 সেন্টিমিটার থিলা স্কেল রাখা যাইতিলা কিন্তু ইনে 1 মিলিমিটার স্টার্ট হয় 1 मिलीमीटर तार माने इने स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑफ स्केल 1 सेंटीमीटर थिला किंतु इने स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर 1 मिलीमीटर है तार माने लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज इक्वल टू इस समान फार्मूला लगवाना स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर बाय इने भी डिवीजन मन रखिथिबो
से 10 डिवीजन के लिए स्केल का 1 सेंटीमीटर आछे किंतु वर्नियर कैलिपर में 10 डिवीजन के लिए स्केल का 1 मिलीमीटर आसबा तो स्मॉलेस्ट रीडिंग ता इने 1 सेंटीमीटर थिला इन स्मॉलेस्ट रीडिंग ता होचे 1 मिलीमीटर किंतु तापर गोटे गोटे डिवीजन रे केते हम के हिसाब से जानबा जे स्मॉलेस्ट रीडिंग 10 ता डिवीजन के लिए आइस सो नंबर ऑफ डिवीजन डिवाइड करबो आइ जीवो तार माने एटा जदि हम सॉल्व कर दिने लिखि दोछे स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर दैट इज इन स्मॉलेस्ट रीडिंग 1 सेंटीमीटर थिला किंतु इन स्मॉलेस्ट रीडिंग 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन इन भी केता डिवीजन अछि 10 डिवीजन देखो बारंबार कहते 10 टा डिवीजन के लिए 1 सेंटीमीटर अछि तो गोटे डिवीजन रे केते रहबा दैट इज लिस्ट काउंट सो गोटे डिवीजन रे केते रहबा के हिसाब से जानो 10 डिवाइड करम बियोजिले भी 10 टा डिवीजन के लिए 1 मिलीमीटर अछि सो गोटे डिवीजन रे केते रहबा 1 मिलीमीटर बाय 10 1 मिलीमीटर बाय 10 दैट इज 0.1 मिलीमीटर सो लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 0.1 मिलीमीटर ये टाइप में तुम लिस्ट काउंट करा जीवा मन रखि थीबो तुम जेतेटा डिवीजन रो लिस्ट काउंट पचरे छै तुम आराम से बाहर करि पारबो बिकॉज़ तुम फर्स्ट जानबा अछि किंतु जे इस स्केल रो स्मॉल रीडिंग की पारबा 1 सेंटीमीटर तो 10 टा डिवीजन के लिए करे छै तो 1 सेंटीमीटर बाय 10 करबो तो गोटे डिवीजन रो वैल्यू केते अछि दैट इज लिस्ट काउंट इच स्केल में तुम 10 टा डिवीजन के लिए 1 मिलीमीटर अछि तो गोटे डिवीजन में केते हेबा 1 मिलीमीटर बाय 10 और गोटे डिवीजन में जहां बारी दैट इज लिस्ट काउंट ऑफ द स्केल तो थैंक यू आज एतकी थाउ सब प्रिपेयर ही थो हाँ आउ राउंड अप देखी दी देखो राउंड अप किसी नहीं ना देखो वैल्यू 2.475 2.472 अच्छे सपोज से 5 रु कम अच्छे तो जब हम इटा रिप्रेजेंट करना 2.47 लिखी पारम किंतु इटा के हिसाब से लगलो स्मॉलर देन 5 तो ये वैल्यू के जब हम राउंड ऑफ करेंगे लिखते हैं पार 2.47 तो हमने राउंड ऑफ का 2 डेसिमल लिखा तापर जदि ये से 2.47 आई थांता ले मु केते लिखि थी 2.4 जे तू 5 रु अधिक अछि तो इने जो संख्या अछि ताने +1 होबा 5 तार स्मॉलर देन 5 रहबा मींस कांस्टेंट रहबा वैल्यू का और ग्रेटर देन 5 रहबा मींस +1 होबा ग्रेटर देन 5 देन जो पाके जो वैल्यू अछि जरा +1 मन रखियो एटा होचे राउंड तो ये मन रखियो जहाँ क्लास गोटे क्लास करा गला नेक्स्ट देखमा।